till this date, if there is one male playback singer who promoted sibling affection in this country with a demure looking but a spunky young girl, it's this man with a golden heart and a fulsome, well-pleasing smile. What grew as a hobby between a young brother and a sister turned him into a professional singing sensation, with his work spreading across iconic numbers like Behti Hawa and Three Idiots, to Dil Chahta Koi Kahe Kehta Rahe, infectious number, and also a timeless melody like Chand Se Farish in Fana. Welcome to the show, Mr. Shaan Mukherjee. It's actually a pleasure knowing you all these years from the national capital of Delhi and rest parts of the country as well. But what a formidable career that you have had so far, and what an immense talent that you have had from the Khans to the Kumars that you have sung for. I actually want to understand that after losing father at an early age, how difficult or easy it was to turn singing into a decent livelihood. I've been, looking forward to this evening. We've interviewed so many prolific personalities across the broad spectrum of our society. So I'm glad that I finally got my chance to talk with you. And coming straight to the question, of course, yes. Honestly, being brought up in Mumbai, being a son of a composer who was very, very well known within the industry. So, right from the great stalwart singers like Asha ji, Lata ji, Kishore Da, and, a lot of composers who, had very high regard for my father, Shri Manas Mukherjee ji. Maybe, his music or his work didn't make him very successful or very popular, but there was a lot of goodwill for him in the industry. So even though I lost him very early, but it helped open doors for me if I went and told someone that I am Manas Mukherjee's son. Arey, dada ke bete ho, aaja, arey dada. He was also a very helpful, very, very kind-hearted person who's touched a lot of hearts. So, arey dada to, itne pyare insan the, aaja. So it gave me a lot of, it opened a lot of doors for me. And of course, if I had my father, now I think back, because of his kind of talent and his kind of, superior, music training and, the whole musical sense, it would have been very difficult for me to choose this line. और also साथ साथ जैसे आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि इसको livelihood बनाना, ये मैं मतलब I took a risk. So honestly, for a long time I was avoiding making singing my career. I was doing a lot of other, I started a little business, I was doing other odd because jobs. Of the family responsibility towards a sister and a mother? Also, I wasn't sure that, it would have been a bit of a selfish idea कि मुझे singer बनना है, because, these things are so, it's a, 1 in 1,000 कभी number लगता है. जी. तो, उस आड़ में ऐसा ना लगे कि, मैं मेहनत नहीं करना चाहता, मैं singer बनूंगा, बैठा हूँ और कोई काम काज है नहीं. तो, I try to do a lot of other things where I could make a livelihood. But strangely, I kept going back to music. और कहीं ना कहीं कुछ गा देता था तो लोग फिर बुला लेते थे. और बचपन से ही jingles गाना शुरू हो गया था और फिर वही चलता रहा. By 1920, age of 1920, I kind of got sucked back into music, whether I wanted it or not. जी. And ढंग की livelihood बननी शुरू हो गई. So I said, चलो यार इसी पर मेहनत करते हैं. Correct. जहाँ से रोजी रोटी मिल रही है. Right. Let's try and put all my effort into being a better singer. Those years, your mother was working? Yes. My mother was working even while my father was with us. She used to sing in chorus, and right from 1970, that was even before I was born, till the turn of the millennium, till 2000. And my mother has been awarded by Dada Saheb Phalke award also for the Cine Singers. So yes, nothing great, but so was it she who actually trained or ingrained the virtues of singing inside you? Both my parents were trained singers, and my father, we had a small room where we used to live in. So, in the same place where we are sitting right now in Bombay? No. This living room was actually bigger than my entire house way back then. But it was beautiful because there was music everywhere. My father was such a fantastic, composer. There'd be sittings and पूरे room में कचाकच जो musicians से भरे हुए रहते थे. Correct. तो उस माहौल में पला बड़ा हूँ.
So I would never call myself, middle class or poor. I think I was very rich because I was musically very rich. You also had a very eventful journey when you began with your singles. Of course, many people like us who were then studying mass communication and journalism in late 90s and 2000s in the colleges abroad or in India. I remember Tanha Dil, the song of the Bachelors, became actually a hobby for us to listen to your numbers. So was that actually the purpose to redefine the bachelorhood in that? नहीं, मैं of course I was a bachelor in those days, but ऐसी कोई मैंने इतना सोचा तो नहीं था, लेकिन लिखने का शौक था और राम संपत जिन्होंने कंपोज किए थे, चाहे भूल जा हो, तन्हा दिल, गुमसुम हो क्यों, मैंने खुद कंपोज भी किया था. तो उस एल्बम के पहले भी हम लोग एक एल्बम बनाया था लवोलॉजी. तो लवोलॉजी वाज मोर टीनी बॉपर काइंड ऑफ एन एल्बम, काफ़ी उसमें उस तरह के फ्रिवलियस थॉट्स पे गाने थे, सब कि लवोलॉजी में फर्स्ट, बाकी सब में फेल. तो वो सारी चीज़ें थी. तना दिल तक आई थॉट कि अब तक मैं थोड़ा सा मैच्योर हो गया हूँ और थोड़ी सी और संजीदा बातें होनी चाहिए. आई शुड टॉक अबाउट लाइफ एंड टॉक अबाउट लाइफ्स. So those songs were penned when you were going through a struggling career, or it was that no, it was a conscious effort to show? Right. No, none of that. I never felt ever this struggle वाली feeling कभी आई नहीं मुझे. क्योंकि I was always having, I mean, my life's motto is जैसा भी हो, you have to enjoy that moment. Correct. Have fun. ये बचपन से ही मेरा एक पता नहीं इनबिल्ट था. ज़्यादा कुछ I haven't read much, but it was a thing that I never felt कि ओ मेरी ज़िंदगी कैसी है, it's so sad. हमेशा लगता था कि यार I'm very fortunate to have the life that I have. तन्हा दिल I just written for my friends. हम लोग सब साथ में स्कूल में पढ़ते थे, हमारी एक ग्रुप थी, और फिर धीरे धीरे सब नौकरी की तलाश में या for a better living सब इंडिया छोड़ के चले गए. They actually became an ode to the bachelorhood who were feeling lonely at home. Yeah, I mean especially when they're away from their home and away from their beloved. Yeah. तो मैंने तो ऐसे ही अनविटिंगली लिखा था इस गीत को. इवन भूल जा, मुझे कभी ब्रेकअप की वो दर्द, वो फीलिंग नहीं हुई, लेकिन मैंने कई लोगों को देखा कि यार वो ब्रेकअप के बाद बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं. करेक्ट. तो मैंने कहा कि भूल जा, जो हुआ उसे भूल जाए मेरी. तो उस तरह से सो आई टू राइट, इसलिए मैं लिखता था क्योंकि मेरे पिताजी ऑफ कोर्स लाइक आई टोल्ड यू घर में सिटिंग्स होती थी. बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े लेखक हमारे घर में आते थे. निदा फाजली साहब, योगेश जी, मधोज बिलग्रामी जी, बहुत सारे लिरिसिस्ट के साथ जब डैड काम करते थे, तो मैंने देखा कि उनकी शायरी कमाल होती थी, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं ना उनके लिए थोड़ा मामला थोड़ा हैवी था. करेक्ट. तो पॉप म्यूज़िक के लिए शायद वो सूटेबल हो ना हो, तो इसलिए मैं मजबूरन खुद लिखना शुरू कर दिया. हालांकि अल्फाज जो थे वो कहना कि बड़े हैवी होते थे. अगर मैं इसको पुख्ता अंग्रेजी में बोलूँ तो बड़ी एरोडाइट लर्निंग थी. वेरी एरोडाइट यूसेज ऑफ माय पोएट्री. माइन वाज वेरी basic, very rudimentary, basic, very rudimentary. Yes. But still, I would say the impact it had on erudite Yeah. What I people wanted as to well. do is that since I don't have much of मेरे शब्दकोश, मेरी vocabulary उतनी हैवी नहीं थी हिंदी में स्पेशली या उर्दू में, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं थॉट थोड़ा सा नॉवल अलग रखूं, तो फिर ना पूरी प्रेमाइस अगर नहीं हो तो फिर ऑटोमेटिकली कुछ नई बात हो सकती है. तो तब तक किसी ने ये बात नहीं लिखी थी कि मैं मजबूर हूँ, मैं देश से या अपने गांव से या अपनी जगह से दूर हूँ, मुझे जीना तो है ही, लेकिन फिर भी क्यों मेरे ये यादें क्यों मैं भुला नहीं पा रहा हूँ. तो ये थॉट नहीं थी. तो इसी तरह से काफ़ी क्योंकि मुझे याद है गुमसुम हो क्यों, गुमसुम भी जो शब्द है हम जनरली आसपास हिंदी में, दिल्ली की जो हिंदी अगर वो नेशनल कैपिटल में जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो आज आप उदास क्यों दिख रहे हो, लेकिन जिस तरीके से आपने उसको मुझे याद है आप फार्म्स में से गुजरते हुए जा रहे हैं, वो एक शायद हाथ में डंडी पकड़ी हुई है, क्योंकि मेरा वो सॉन्ग मेरे दिल में बसा हुआ है. गुमसुम हो क्यों पास आओ ना. क्या बात है रोहन. तो आपने वो गाने को जिस तरीके से टर्न दिया है ना, वो मुझे याद है एक लूज सी आपने शर्ट डाली होती है. उस दिन जहाँ हम शूटिंग कर रहे थे, फिल्म सिटी में ही कर रहे थे, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी. Correct. और इस तरह से कभी लाइट आ रही है, कभी लाइट जा रही है, कभी बारिश हो रही है, तो शूट करने का मौका बहुत कम मिला था. राइट. तो जब थोड़ा मौका मिला था हम लोग कुछ ना कुछ शूट कर लेते थे. शूट हो जाता था. और फिर चूंकि आउटडोर हमने कर नहीं पाया, तो कुछ एक दिन इंडोर में कुछ करके भी कर लिए थे. जो भी हो, एक वक्त है जब एक वक्त में कुछ चलना होता है ना, आप कुछ भी कर लो,
चल जाता है। Correct. और फिर कुछ ऐसे वक्त होती है ज़िंदगी में जब आप जितने भी हाथ पैर मार लो, नहीं चलना है तो नहीं चलना होता है। सो आई ऑल्सो बिलीव इन डेस्टिनी अ लॉट। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा वक्त था कि मजबूरी में कुछ कर लिए, लेकिन वो भी अच्छा खासा चल गया। So if I may ask you a paradoxical question here, not exactly a rhetorical question, but paradoxical, what was more rewarding, being a bachelor when you wrote these songs and sang these songs, or conversion from a bachelorhood to a secured manhood and becoming a doting father that you are today to young sons? No, as in I was a bachelor, but I was still committed. I had a girlfriend for a good 4 years. Correct. Who I married later, and then we had children. So in fact, Gumsum ho kyun, I wrote a song that was written for Radhika. Right. वो जब हमारी कोई अनबन होती थी तो एक तो बताती नहीं थी किस बात पे वो उदास है, गुमसुम है, नाराज़ है, चुप्पी ठान लेती थी, और फिर आई वुड जस्ट कीप अज्यूमिंग, वंडरिंग। कभी गलती से जो चीज़ के बारे में उसे अंदाज़ा भी नहीं था वो कह देता इस बारे में तो नहीं कर रहे हो तुम, क्योंकि मैं उसके साथ वहाँ गया था, क्या तुम और भी गड़े मुर्दे निकल आते थे। जाने में तुम कैसे खफा हो गई। देखिए मुझे आपके नंबर, क्या बात है, नहीं आपको तो याद है। हम भले ही पॉलिटिकल डिफेंस जर्नलिस्ट रहे हो, बट आपके सॉन्ग्स ने हमें बड़ा यूथफुल, फुर्सत के दिन थे, बड़े फुर्सत के दिन थे। जी। तो नहीं, आई थिंक लाइक आई सेड, आई नेवर फील द नीड टू, लोग कहते हैं कि यू गॉट टू डू व्हाट यू लव, बट आई आल्सो बिलीव दैट यू गॉट टू लव व्हाट यू डू। करेक्ट। तो मैं जो कुछ भी कर रहा, अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, सो आई एम टोटली इनटू दिस। कैन वी एक्चुअली हैव यू सिंग दैट सॉन्ग एज वेल? गुमसुम हो क्यों? क्यों नहीं। गुमसुम हो क्यों, पास आओ ना, रूठे हो यूं, मान जाओ ना, दिल में है जो, खुल के कहो, ऐसे सताओ ना, गुमसुम हो क्यों। Amazing. What an absorbing number it was. Shaanji, there was also a time when your songs had a bit of a playfulness, I would say, a bit of a mischief element, a bit of awkwardness in the songs. I'll tell you which were they. Was मैं ऐसा क्यों हूँ, सुबह हो गई मामू. Do you actually think today, looking that in 2004 or 3 when these songs were released, that it reduced the enormity of the powerhouse of a talent that you were, or you needed that to bring the variety in your singing as well? No. I think these songs, I sing them at shows and stuff also. People really enjoy them. Shankar Ehsaan Loy के लिए लिखा और एक अनु मलिक जी के लिए का गाना है. Lekin I think they were probably situation songs, but went on to become very popular songs because of the way they were probably portrayed or picturized. But I never look at songs as the potential of singing that song requires. For me, the singer cannot become a medium of distraction. I have to attract people to the song. So the song has to be priority. So if I'm singing, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, I can't, मैं ऐसा क्यों हूँ, I can't, मैं ऐसा क्यों हूँ. So it'll turn into a pathos or something. I'm trying to sing a song that is very carefree. So it's important to get into the skin of the song. Correct. And luckily I got all kinds of song. I never was typecast as a singer. हाँ, एक बात है कि हाँ, मतलब संजीदा, सूफी, भारी, दुखी गाने मुझे नहीं मिलते थे, क्योंकि मैं हमेशा मुस्कुराते रहता हूँ, अभी भी मुस्कुराते रहता हूँ. तो शायद जब कास्टिंग कोई करता होगा तो बोले नहीं, शांत से वो गाना, ये तो हंसते हंसते मैयत का भी गाना हंसते हंसते गाता है. बिल्कुल. So I have not sung too many sad songs or too many very heavy songs. So I think most composers or most they're all my friends, and correct, they look at me as more of a lively character. So उस हिसाब से I've sung a lot more of these fun, lively songs. But I must tell you that because I have been a political journalist, whenever we come across even sincere politicians in Delhi as well, I have seen them singing your songs on the way from the parliament, and just when they are getting bored. One of them I heard even singing Dawn's song as well. I think a lot of them must be singing Dawn. बहुत ही खतरनाक हूँ मैं, हर एक पल में चालाक हूँ. Can we have that from you? दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे, मुझको पहचान लो. Dawn.
इस गाने को जब मैं गा रहा था ना तो मुझे लगा डॉन है तो थोड़ा सा उसमें एक अग्रेशन होनी चाहिए, और मैं जब गा रहा था दुनिया में लोगों ने ऐसे करके गा रहा था, तो फरहान अख्तर भी थे एंड ही वाज काइंड ऑफ स्मर्किंग स्माइलिंग, क्या कर रहे हो, क्या मतलब डॉन लगना चाहिए ना, तो बोले नहीं ये लग रहा है कि फेक डॉन है। सेइंग इफ यू आर डॉन यू शुड बी मोर सेल्फ एश्योर्ड, lay back, sit back on the दुनिया में लोगों ने, have that attitude rather than दुनिया में लोगों ने दिल अपने। तो I said हाँ बात तो सही है।